Inflation spike. Read on inflation. This Inflation figures adjust. Urgent inflation. Inflation has been. Inflation in the 7. Pull down inflation is. Nowadays we are very familiar with term inflation. Inflation मतलब महंगाई. तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं महंगाई होती क्या है और ये बढ़ती क्यों है और मोर बेसिक की इसे मेजर कैसे करते हैं. सभी जानेंगे ये कितने प्रकार की होती है और इसके फायदे और नुकसान. महंगाई का मतलब है चीजों की कीमत का बढ़ जाना. जब महंगाई बढ़ती है तो आप उतने ही पैसे से पहले जितना सामान खरीद पाते थे अब नहीं खरीद पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2023 में जो पिज्ज़ा 100 रुपीज़ की थी आज 2024 में उसी पिज्ज़ा की प्राइस 120 रुपीज़ हो चुकी है. तो आप 100 रुपीज़ में वो पिज्ज़ा नहीं खरीद पाएंगे. इट्स ऑल ड्यू टू इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कुछ मेजर रीजन है जैसे डिमांड का बढ़ना या सप्लाई चेन में डिसरप्शन. जब कभी लोगों की खरीदारी बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तो प्राइसेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. इसे मेजर करने के लिए हम CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. जब ये इंडेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. मेनली इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश. फॉर एग्जांपल धनतेरस और अक्षय तृतीया पर गोल्ड की हाई डिमांड की वजह से हमेशा गोल्ड की प्राइस बढ़ती है. इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. वहीं रूस और यूक्रेन के वार के टाइम क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई. इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन के फायदे और नुकसान दोनों को जानते हैं. इन्फ्लेशन का फायदा तब होता है जब आप इन्वेस्टर होते हैं और आपके पैसे एसेट्स और शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड और शेयर मार्केट. जब सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और आपको फायदा होता है. इसका नुकसान भी है. जब आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखे होते हैं और इन्फ्लेशन रेट सेविंग रेट से ज़्यादा होता है तो आपका परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है. Inflation and interest rates. How concerned are you about inflation? And what is the view as far as interest rates are concerned? Do you expect a cut anytime soon, or do you believe on account of where inflation is at this point in time, the cut perhaps is going to be further pushed out? This is a question which I'm sure every journalist would love to ask. And Shireen leads the bandwagon. I respect her for asking me this question. I will certainly try to give an answer. Please sit. I know there is, like the way I said about fiscal consolidation, fiscal tightening, there is also this discussion about inflation. The question that it is the top 3 perishable goods which are causing stress on to the inflation numbers, whilst for the core others, the numbers are actually in the low 4 or 3, on the higher end of 3 but lower end of 4, and so on. I do not want to get into this debate of whether perishable should be part of inflationary measure index or whatever, and whether it is just a supply chain problem, demand supply problem, we should influence the decision of the MPC or not. Yes, we know India periodically and cyclically suffers from adequate supply of perishable commodities. We as a government are making a lot of efforts towards scientific and more rigorous storage facility for perishable commodities. So till you really get on the top of that issue, you will periodically have this problem of tomatoes, onions, and potatoes causing immense stress in a cyclical fashion. When you have this harvest season, you get it all, and later if there has been a rain or a drought and end of the supply season, you always have a shortage. We try to import, we try to make up. And edible oil is another thing. I think the government is doing right by supporting growers to have more oilseed production. We've even brought in a palm oil mission so palm can be grown in favorable climatic zones of the Northeast.
We are making sure the pulses are being brought in as and when there is a requirement. But global markets don't go by your demand and supply ups and downs. They want a consistent flow of pulses to come into India. So complex issues, but very much affecting the common man. So inflation gets actually very, very volatile because of the supply-demand constraints. Equally, I think what is important is when you look at India's growth requirements, and you can have so many different voices coming out and saying the cost of borrowing is really very stressful. And a time when we want industries to ramp up and move building capacities, bank interest rates will have to be far more affordable. So I'm putting as much what Shireen asked me as a reply back to you saying these are our requirements if we have to make Vikasit Bharat not just an aspiration but as a reality. So we need to have a lot more conversation on this, and I would stop at that. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. ये